अगर तुमसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन का कलर क्या है, तो पटक से जवाब आएगा ऑक्सीजन इज कलरलेस. बट when we can say oxygen is colorless, is oxygen colorless in its all the states? Let's find out. Welcome back everyone. So in this session we will discuss the different percentage which use as a concentration unit. Now see, so this is given actually in the basic concept of chemistry chapter. So from there different concentration units we are going to discuss. Okay, so what are the different concentration units? Number one is mass percentage. When we use mass percentage unit, when solute and solvent both the masses are given or solution masses are given, okay, equal to mass of solute by mass of solution into 100. This is the mass percentage. Okay, now instead of that, instead of mass, if suppose volume is given in centimeter cube or in liter unit, volume is given, okay, both the solute and for the solvent or for the solution, then volume of the solute by volume of the solution, that will be volume percentage. Mass percentage we generally indicate by using W by W, mass by mass, weight by weight, okay, and volume percentage we generally indicate by using V by V. Okay, next is ppm, parts per million. What is the unit parts per million? Parts per million means out of 1 million substance, how many particles are present as a particular solute particle. Okay, so parts per million, or in short form we say ppm. ppm equal to any substance ppm. Suppose it is indicated for air. Okay, in air, what is the ppm of a particular type of substance? Then we say particles of a substance by total number of particles out of 1 million. Okay, out of 1 million means 10 to the power 6. Okay, this is the ppm unit. Okay, parts per million. Suppose it says for particular substance ppm unit we have to calculate, then we can easily calculate. Okay, next unit is before going to the next unit, let's remind you one thing. In case of ppm you see particles of a substance by total number of particles. It can be also said that mass of a particular substance by total mass of the particular mixture into 10 to the power 6, means out of the million mass of the mixture, how much a particular substance contain. That's also important, because sometimes ppm unit you have to calculate not in case of particular number but in case of particle mass. Okay, now next is mole fraction. Okay, mole fraction, which generally we indicate by using symbol chi. Okay, now what is mole fraction? Mole fraction, see, previous three we said about the solute, like mass percentage, volume percentage, and
ppm, we said about the solute, but mole fraction can work both for solute as well as for solvent. Like mole fraction of a particular substance means number of mole of that substance by total number of mole of the mixture. Total number of mole of mixture. Okay, so this is the mole fraction unit. Okay, number of mole you can calculate. How you can calculate? Mass by molecular mass. Okay, so there should not be any problem. But in case of mole fraction, suppose just consider that there are two substances. Those two substances are A and B in the mixture. Okay, suppose A substance has number of mole Na, B substance has number of mole Nb. Okay, so now chi A means mole fraction of A equal to number of mole of A by total number of mole. Okay, similarly chi B equal to number of mole of B substance by total number of mole. Okay, so this is what we can write. Now in this mixture there are two substances A and B. So what will be the total mole fraction? Total mole fraction, if I try to calculate, chi A plus chi B, Na plus Nb is common. In the upper also there will be Na plus Nb, so it should be 1. Always remember that for a particular mixture the total mole fraction equal to 1. Okay, so if in the question it is asked that find out the mole fraction, then find out the any substance. If there are two substances, find out one substance mole fraction and another, to calculate the another substance mole fraction, subtract it from 1. Okay, इसके बाद देखो ए हो गया मोल फ्रैक्शन का. ओके, देन आता हूं किस पे? मोल फ्रैक्शन के बाद आता है मोलारिटी. ओके, मोलारिटी, that is also one type of concentration unit. Molarity equal to, molarity generally indicated by the letter capital M. Okay, now molarity equal to number of mole of solute by volume of solution. Obviously it is in liter. Okay, so what is the unit? Unit is mole per liter. Clear? अगर मिलीलीटर के जगह मिलीलीटर आ गया तो अपर में 10⁻³ होगा. क्यों होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ solute by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ए अगर मिलीलीटर और या फिर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ से. क्यों होगा? क्योंकि ये 10⁻³ को डाउन में ले आओ तो क्या होगा? मिलीलीटर बाई 10⁻³ मतलब मिलीलीटर बाई 1000, मिलीलीटर बाई 1000 मतलब लीटर. ओके, सो एट एनी केस इट विल बी this one. Okay, now see, next thing is,
लेट्स डिस्कस अबाउट मोलालिटी। मोलारिटी की जगह मोलालिटी, LITY, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल m देके। एंड जब हम मोलालिटी एक्सप्रेस करेंगे, मोलालिटी जब एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोलालिटी के टाइम एक्सप्रेस करने के टाइम नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट ऐसे ही रहेगा, लेकिन आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम यूनिट। ओके, सो मोलारिटी हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नाउ सी, नाउ ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, देन अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम यूनिट में रहा, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम यूनिट में रहा तो 10⁻³ ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट 10⁻³ डाउन में रहो 1 ग्राम बाई 10⁻³ मतलब किलोग्राम। सो यूनिट क्या है, मोल पर केजी। क्लियर, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल m से, सो कहीं पर भी स्मॉल m देखो या फिर मोल पर केजी देखो, मतलब वो है मोलालिटी। ओके, नाउ वन क्वेश्चन कैन अराइज फ्रॉम दिस व्हिच इज जनरली गिवन इन द बोर्ड दैट मोलालिटी एंड मोलारिटी में से कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है कौन सा, मोलालिटी। क्यों मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें देखो नंबर ऑफ मोल जो है मास बाय मॉलिक्यूलर मास, वो तो टेम्परेचर डिपेंड नहीं हो सकता क्योंकि मास रेशियो, एंड ए भी मास, तो मास कभी टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। लेकिन मोलारिटी के टाइम था, मोलारिटी के टाइम क्या था, मोलारिटी के टाइम था डाउन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन था। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट सब्सटेंस, वॉल्यूम डिपेंडेंट था, तो इट शुड बी मोलालिटी व्हिच इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, रिटी क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम था, वॉल्यूम इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। See, oxygen is colorless. Okay, on which state? When it is in gas. When it is in solid and liquid state, it shows blue color, or you can say pale blue color. Okay, light blue color. Okay, because two unpaired electrons present in the oxygen, okay, when you give energy, they take energy in the radius region, red color region, and they release light in the blue color region. That's why shows blue color. Okay, so that's why oxygen in solid or in liquid state shows blue color. Another one is that is called normality. नॉर्मालिटी, जिसको हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल N देके। ओके, कैपिटल N देके जिसको एक्सप्रेस किया जाता है, नॉर्मालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वो भी अगर मिलीलीटर में करते तो ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई हो जाता। ओके, नाउ देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है क्या चीज, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मतलब मास बाई equivalent mass by equivalent mass. Okay, and all should be in gram, mass by equivalent mass. Okay, now अभी देखो ये इक्विवेलेंट मास को निकालते कैसे, इक्विवेलेंट मास है क्या, देखो इक्विवेलेंट मास
equivalent mass equal to molecular or molar mass by charge of cation or anion. Actually it should be total charge of cation or anion. ओके इसको हम क्लियर करेंगे एग्जाम्पल देके जे कैसे किया जाता है जनरली। देखो मान लो कि पोटासियम डाइक्रोमेट है, यहाँ पे हम करते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट है मान लो, ओके K2Cr2O7, वो जब डिकम्पोज होगा, पोटासियम डाइक्रोमेट जब डिकम्पोज होगा तो क्या क्या देगा, पोटासियम डाइक्रोमेट जब डिकम्पोज होगा क्या देगा 2K+ आयन देगा, उसके साथ ए देगा Cr2O7 2 माइनस आयन देगा। ओके सो तुम ले सकते हो कि 2 पॉजिटिव चार्ज या फिर 2 नेगेटिव चार्ज। ओके सो 2 दे के डिवाइड करो। डिफरेंट बुक में शायद डिफरेंट कंसेप्ट होगा क्योंकि सबसे इजी है ये रिमेंबर रखना। कहीं कहीं होगा एसिड के लिए जितना H+ दे रहा है, देखो जितना H+ देगा उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये याद रखो टोटल चार्ज ऑफ द कैटायन और एनायन जस्ट बिठा दो। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है, उसका मास दिया हुआ है तो सॉरी उसका मॉलिक्यूलर मास तो कैलकुलेट कर सकते हो। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज क्या होगा 2 दे के डिवाइड करो हो जाएगा। ओके 2 दे के इक्विवेलेंट मास आ गया, मास बाई इक्विवेलेंट मास इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। तुम्हें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्पेशली इन लैब दैट 250 ml n/10 सॉल्यूशन प्रिपेयर करो। n/10 मतलब नॉर्मलिटी है 1/10। ओके सॉल्यूशन इसमें वॉल्यूम तुम्हें मिल गया 250 ml 250 मिल गया। 250 मतलब ये अगर ml में है 1000 मल्टीप्लाई करके वहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। वहाँ से ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया, तुम्हें इक्विवेलेंट मास पता है। ओके अगर K2Cr2O7 का निकालना पड़े या पर कोई इक्विवेलेंट मास पता है। ओके तो वहाँ से मास मिल जाएगा। तो जो मास मिलेगा उसको तुम 250 ml 250 ml पानी में दे दो, तो वहाँ से n/10 नॉर्मल सॉल्यूशन इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ओके सो these are the generally concentration units okay which we have discussed. Okay next day coming with another interesting topic. Okay till then bye. If video is good then like, share and subscribe. Thank you for watching.